Very good afternoon to all of you. Thanks for joining us here on The Big Story. I'm Afrida Rehman Ali. Our top focus at this hour is on the recent order that came from the Allahabad High Court on cow protection, where Allahabad High Court has called for strict laws for protection of cows and also has asked for the cow to be declared a national animal. A single judge bench by Justice Shekhar Kumar Yadav observed that the government should bring in a law to make cow protection more insulated and also bring it under the ambit of fundamental rights. And protecting cows, the judge said, is not the work of only one religious sect. The observation came as the court denied bail to an accused charged for the offences under the Prevention of Cow Slaughter Act in Uttar Pradesh. What is important here is that the Allahabad High Court has called for the cow to be declared a national animal. It has called for greater protection of cows, not just the sham that is currently going on in Uttar Pradesh. The court says that the government gaushalas that are constructed do not offer proper care to the animals. It also talked about how people take donations from public and help from the government in the name of cow promotion, but it is not spent in that interest. These are the issues raised by the judge. And over this issue of cow conservation in Uttar Pradesh, there's another issue that the court has flagged off, and that is about misusing the laws in the name of cow protection. That issue has also been flagged off. I'm going to talk about all these matters. Joining us today on The Big Story is Anand Dubey, spokesperson of the BJP in Uttar Pradesh, and also Sanket Yangai, advocate of the Supreme Court. Very warm welcome to the two of you. Thanks for joining us here on Mirror Now. But before I go across to the experts, let's listen in to some of the inputs that we have. What do the chairman of the Gau Seva Ayog have to say? And then let's also listen in to the political leaders on this issue. इसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हाई कोर्ट की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक वो निर्णय लिया है जो समाज बहुत बरसों से इसकी अपेक्षा कर रहा था, मांग कर रहा था। और दूसरी बात ये भी सही बात है कि काफ़ी दिनों से ये देखा गया है कि कुछ लोग गौशालाएं खोल लेते हैं लेकिन चला नहीं पाते हैं। तो अब जब केंद्र का कानून बन जाएगा तो इससे सारे लोग भी ठीक हो जाएंगे। हम गौ माता के संरक्षण को लेकर, गौ माता के तमाम रखरखाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, देश में, हम चूंकि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और धार्मिक आस्था भी है, तो इसलिए इसको एक बड़ा विस्तार मिलेगा पूरे विश्व के लेवल पर। अगर हम जिस तरह का सुझाव माननीय उच्च न्यायालय का आया है, इस पर अमल करेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में आई है, गाय माताओं के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। वो रोड पे घूमती रहती हैं, चाहे वो बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, बेचारी रोड पे रहती हैं। इन्होंने नाम के गौशाला बनाए हुए हैं, लेकिन वहां पे खाने तक का खाना प्रोवाइड नहीं कर पाते, बेचारी भूख से उनकी मौतें होती हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है, लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती। इससे ज्यादा शर्म की बात तो किसी भी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। आनंद दुबे जी, आपने सुना जो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है, उनका क्या कहना है कि ये जो है एक राजनीति के लिए बहुत सही मामला है बीजेपी के लिए, बट ज़मीनी हकीकत कुछ अलग है। जिस तरह के गौशाला जो है उत्तर प्रदेश में, उसमें कोई गाय की देखरेख तो होती नहीं है ठीक से। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। ये वही समाजवादी पार्टी के लोग थे जिनके समय में उत्तर प्रदेश में हर गली मोहल्ले में अवैध बूचड़खाना चलता था, जहां पर गोवंश की हत्या की जाती थी और बाकायदे इनके नेता जो हैं वो उसमें शामिल रहते थे, पैसे लेते थे और सरकारी संरक्षण में गो हत्या को अंजाम दिया जाता था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, हमने निश्चय किया कि उत्तर प्रदेश में अब एक भी गोवंश काटा नहीं जाएगा, उसको पूरी तरह से संरक्षित किया जाएगा। इसलिए हमने लगातार अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई की, उनको बंद करने का काम किया। जहां भी गोवंश की हत्या की सूचना आई, पुलिस वहां फौरन पहुंची, कार्रवाई की। हमने गोवंश हत्या के जो कानून है उसको इतना मजबूत किया, 10 साल की जेल, 5 लाख रुपए बराबर करते हैं आनंद दुबे जी, उस पे हम सवाल नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों को अरेस्ट करते हैं काउ स्लॉटर मामले में, आप कैटल ट्रेड में आपने पाबंदी लगाई है, वो सब तो ठीक है। हम ये पूछ रहे हैं कि जो गाय, द काउज
that cannot produce milk anymore, उनका तो देख रेख मेंटेनेंस होगा ना, फिर उनको स्लॉटर तो नहीं किया जाएगा, ऑब्वियसली उनको मेंटेन किया जाएगा। तो उसके लिए आपकी जो सरकार से 5 साल यूपी में अभी तक जो हमें तस्वीर मिल रही है फ्रॉम आवर रिपोर्टर्स ऑल्सो इज दैट गौशाला प्राइवेट हो या पब्लिक हो, कोर्ट का भी यही कहना है कि वहां पे कोई देखरेख सही से नहीं होता है, मेंटेनेंस ऑफ द काउज, दोज हु हैव आउटलिव्ड देयर यूटिलिटी, उनका कोई सही से केयर नहीं होता है। तो आप बार बार सिर्फ काउ स्लॉटर और काउ ट्रेड पे मत जाइए, बाकी जो मेंटेनेंस इशू है ऑफ द एंटायर लॉट ऑफ कैटल, उसके बारे में भी बताइए हमें। देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें यह समझने की जरूरत है कि इसके पहले की जो सरकारें थी वो क्या करती थी, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे यहाँ ऐसी भी सरकारें नहीं है, आपको याद होगा नहीं, 5 साल तो आपकी सरकार है ना यूपी में, उससे पहले क्या होता था उस पे नहीं जाना है जी सर, आप अभी का बताइए। अभी जो गौशाला में क्या आपने देखा, खुद आप यूपी में रहते हैं, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, 5150 अस्थायी रूप से निराश्रित गौशाला चल रही है, 400 गो केंद्र जो है वो शहरी इलाकों में चल रहे हैं, जहां पर 5,26,000 गोवंश को संरक्षित किया गया है। हमारी सरकार ने 98 लाख गोवंश की टैगिंग की है, बाकायदे टैगिंग की है पहली बार, और उत्तर प्रदेश वो पहला राज्य है जो गोपालन के लिए पैसा दे रहा है। 900 रुपए हर महीने हम उन लोगों को देते हैं जो गोपालन का काम करते हैं। कई सारे और अगर कहीं जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो ये भी कह रहे हैं कि उनके पास फंड्स नहीं है। हम ग्राफिक्स में चला रहे हैं, आप देखिए जो कंडीशन है गौशाला में, और आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स है जो वहां से जिला अधिकारी जो कह रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त फंड्स होते नहीं है गौशाला में लगाने के लिए, क्या ये सही है? नहीं, देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। गौशाला के लिए सरकार लगातार धन मुहैया करा रही है, लगातार जो है उनके संरक्षण पे कार्य कर रही है, और जहां कहीं भी कुव्यवस्था आई है, जहां कहीं भी लापरवाही की शिकायत आई है, तो संबंधित अधिकारी और विभाग के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई है। अगर कहीं किसी ने इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश की गई है तो उन लोगों पर भी कार्रवाई की गई है। हम मान सकते हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था है, कहीं 1-2 जगह कोई कमियां मिल सकती है। बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो आप कह रहे हैं जिला अधिकारी भी गलत है और कोर्ट भी गलत है। कोर्ट ने कहा है ना कि गौशाला में मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा है। आपके जिला से जो रिपोर्ट्स आते हैं वहां ये भी हम चला रहे हैं, आप देखिए कि उनको जो ओल्ड काउज एंड वंस हु आर नॉट प्रोड्यूसिंग मिल्क वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, उनको मंजूरी नहीं है वो रखने का। तो कहाँ उनको उनका क्या किया जाए? What happens to that cattle that is not accepted in गौशालास? देखिए, अगर आपके पास ये जानकारी है तो बिल्कुल गलत है। गौवंश पर कहीं भी ये नियम नहीं है कि जो दुधारू गाय हैं सिर्फ उन्हीं को गो आश्रय केंद्रों में रखा जाएगा। ऐसे तमाम गोवंश, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो दूध दे रही हो, चाहे वो निराश्रित हो, ऐसे सभी को उस आश्रय स्थल में स्थान मिलता है। उनके लिए उनके चारे का, उनके पानी का, उनके लिए डॉक्टर का, हर चीज का इंतजाम है। हाँ, माननीय उच्च न्यायालय ने अगर टिप्पणी की है, कहीं का संज्ञान लिया है, कहीं अगर कुछ जगह कोई कमियां नहीं है उसका संज्ञान लिया गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार उस पर ध्यान देगी। नेशनल एनिमल तो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन क्या उनकी देखरेख होगी कि नहीं? दैट इज द क्वेश्चन वी आर आस्किंग हियर। लेट मी आल्सो ब्रिंग इन मिस्टर संकेत यंगई. Mr. Yangay, the other issue that the Allahabad High Court has raised is of the misuse of the existing laws. And if I can just bring to your notice, according to UP government data, more than half of the 76 of the 139 arrests recorded in the state under stringent NSA till August 19 were on charges of cow slaughter. So, एक तरफ तो बहुत सख्ती है, is what we are seeing, but there is also an issue of misuse of these laws. Mr. Yangay. So let us make it very clear that the law is not enforced from yesterday or today. It has been enforced since on the day the Constitution has been enacted in the year 1950. Article 48 of the Constitution of India, which deals with the directive principles of the state policy, deals with the prohibition of cow slaughter as one of the directive principles of the state policy. It says specifically that the state shall endeavor to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle. Further, in connection thereto,
the state list which is specified under the 7th schedule of the Constitution, more particularly entry 15 of the state list, provides and empowers the state legislature to frame exclusive legislation for the prevention of the slaughter of and for the preservation of the cattle, and which specifically deals that the preservation and protection of and improvement of the stock and the prevention of animal diseases, veterinary training and practices, so on and so forth, which deals with the cattle protection and preservation. And further, several state governments, under the power conferred to them in entry 15 of the state list, that is 7th schedule of the Constitution, have enacted cattle preservation laws in one form or the other. But there are still the states like Arunachal Pradesh, Kerala, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, Lakshadweep, and Andaman and Nicobar Islands, which have not framed any legislation insofar as the protection and preservation of the cattle, more particularly the cow or the calf, which we are now discussing about. So in one or the other way, certain legislations are being enacted in certain states and certain states have not adopted at all. But in one way, it is only a directive principle of the state policy, and this matter was already considered by the Supreme Court in the year 1958 itself, after the Constitution coming into force in the year 1950, wherein the Muslims of Bihar petitioned the Supreme Court that the ban on the cow slaughter has violated their religious right. The Supreme Court has rejected it unanimously and said it will not violate the religious right. And several cases subsequently, like Muhammad Hanif Qureshi versus State of Bihar 1959, Hasmatullah versus State of Madhya Pradesh, Abdul Hakim and others versus State of Bihar in the year 1961, Muhammad Farooq versus State of Madhya Pradesh, subsequent judgment, wherein the Supreme Court has said, keeping the practical view about the cow slaughter and the difficulties in not slaughtering or cow slaughter, the Supreme Court has said, I quote, a total ban on the cow slaughter. All of that, of course, is there in what has happened so far. But the current order, Mr. Yangai, has drawn a lot of attention for the way it puts, phrases this order, where it says that the fundamental right is not only the prerogative of beef eaters, but also of those who worship the cows and are financially dependent on it. So there is a big thrust on preserving cattle, on maintaining them, on conserving the cattle. But then there are challenges, isn't it? Don't you think that this becomes an issue, that when we look at the fine print, when it comes to the burden of maintaining the cattle, who should be exercising that responsibility? This question has already been answered by the Supreme Court in one of the judgment, wherein the Supreme Court says a total ban on the cattle or the slaughter, a total ban on cattle slaughter was not permissible if under the economic conditions, keeping useless bull or the bullock be a burden on the society and therefore not in the public interest. So the Supreme Court says, if the economic conditions do not support, the slaughter of the ban cannot be supported at all. So it is not that in all the circumstances the cow slaughter would be permitted. Yes. No, so slaughter is out of the question. I was asking, should the state also not be ordered to take full responsibility for conserving the animals and maintaining their health and safety? Because right now, that becomes a bigger concern there in UP. Unfortunately, this is a short duration discussion. We'll have to leave it at that. Sanket Yangai and Mr. Anand Dubey, thank you so much for joining us. The important part also is that whether the authorities in Uttar Pradesh or for any other state for that matter will take note of what the Allahabad High Court has said in terms of protection of cows, and by the protection it also means the actual safety and shelter for the cows, not just the chest thumping and the rhetoric about cow slaughter and making it a communal issue or any of that, but more about helping these animals survive in the right conditions, creating livable conditions for the cattle. That is again an issue that the Allahabad High Court has flagged off, and that is what it describes as cow protection in the real sense of the term. Thanks so much for joining us. Thanks for watching.